Good evening, students. So last class we given you one handout. So half we have done. So remaining half places in news we will cover today. Page number 14. Now here in Ethiopia there is a region which was in news here, northern Ethiopia. This is Tigray. And here bordering to this area we have another region, Amhara. They might ask match the following. Okay, so it was in news because of drought and conflict. Okay, so I give you information about this. This is Ethiopia, part of your Horn of Africa, SEED, 4 country we have done: Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti. Okay, so here we write some extra information about this. "400 Ethiopians in the Tigray region have died of starvation." "400 Ethiopian has died in this region because of starvation." This region has faced dual crisis, drought and conflict. Two regions has been affected by drought. One is Tigray, another is Amphara. Tigray and Amphara, Amphara, in Ethiopia. See, the idea is 14 months ago, like they just come over from a civil war. There was a civil war in this region, and after civil war, so then there is a problem of drought and conflict, and because of that, like many Ethiopian has died because of starvation. That was the reason. Now we have some extra information about this region, Tigray. This is mountainous landscape. Okay. You can write one more point about this Tigray. Historically use its terrain. Historically this terrain has been used. Historically this terrain has been used to defend against invaders, including Greeks, IROB, and Kunama tribes, Kunama peoples. Okay, this is mountainous region. This terrain has been used to defend against invaders. Invader कौन थे? Greeks थे, IROB थे, Kunama people थे. And the capital of this region, Tigray region, is Mekelle, Makelle. Okay. But you can see one point
like this is Ethiopia. Capital of Ethiopia is Addis Ababa. This region have faced civil war, then drought. And where is the headquarter of African Union? Here. अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे है एडिस अबाबा में. Just one extra information for reference. Headquarter of African Union is in Addis Ababa, capital of Ethiopia. Ethiopia की capital में. This Addis Ababa, this is like capital of, this is headquarter of capital of Ethiopia, and here we have headquarter of African Union. Now next is there was a summit where these three regions which are very important, Amazon, Congo and this Borneo Mekong region, and we have tropical rainforest in this region. Well, this is a major area. They have a summit. Just tell you the background, ठीक है, जो मुझे लग रहा है, not like officially I have read. अब like these are carbon sink area, and what they have like here forest, technology like developed countries have. तो मे बी ये तीनों मिलके ऐसा ना कह दे कि भैया हम अपने जंगल जला देंगे, ठीक है, फिर जाओ कहाँ जाओगे तुम टेक्नोलॉजी लेके. कार्बन क्रेडिट, ठीक है, फ्यूचर जो है ना कार्बन क्रेडिट का है. The industry which are on carbon credit, जो carbon credit भी like that will be like a currency in future. गोल्ड है ना जैसे, तो कार्बन जो है क्रेडिट भी फ्यूचर में एक ऐसी चीज. फ्यूचर वार जो होंगे वो पानी पे होंगे, ठीक है. डेटा आया, जैसे जियो वाले ने ऑयल की जगह जियो उल्टा कर लिया, डेटा उनको लगा था डेटा इज न्यू ऑयल. सिमिलरली हियर दिस कंट्री, दीज आर डेवलपिंग कंट्री, और ये तो और भी लिस्ट डेवलप एरिया अफ्रीकन कंट्री, बट दे हैव कंट्रोल ओवर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मतलब अगर ये तीनों रीजन मिल जाएं एंड दे आर एट ए बार्गेनिंग पोजीशन विद द डेवलप्ड कंट्रीज कि बोलो भैया आप टेक्नोलॉजी दोगे कि नहीं दोगे, बिकॉज फ्यूचर में कार्बन सिंक और कार्बन क्रेडिट की ही बात होने वाली है. तो इन्होंने एक सबमिट की है और पहले भी की थी, लाइक दैट सबमिट दे हैव डन अर्लियर इन 2011. पहले जो सबमिट की थी 2011 में, एंड रिसेंटली दे हैव वन सबमिट जो हुई है ब्राज़ाविले समिट ऑफ 3 बेसिन एरिया. ये 3 बेसिन एरिया का 2023 में 26 to 28 अक्टूबर दे हैव डन वन सबमिट. तो आई गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, ठीक है. यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन, प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो मेंस में भी अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन. So you write summit of the 3 basins congregate in Brazzaville, Republic of Congo. To strengthen, एक सबमिट हुई है, सबमिट ऑफ 3 बेसिन्स. ये बेसिन एरिया, वन इज लाइक अमेजन रिवर, एक मैकोंग रिवर का हो गया, एक कॉन्गो रिवर का बेसिन्स हो गया, एंड वी हैव वेरी डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. सबमिट ऑफ 3 बेसिन्स congregate in Brazzaville, Republic of Congo, to strengthen South-South governance, for 3 ecosystem. इसका पर्पस क्या था? टू स्ट्रेंथन साउथ गवर्नेंस फॉर 3 इकोसिस्टम. ब्रैकेट में लिखो अमेजन, कॉन्गो, बोर्नियो, मैकोंग. अमेजन, कॉन्गो, बोर्नियो, मैकोंग. There is an island, Borneo Island,
and there is a river, Mekong river, that region. Amazon, Congo, Borneo, Mekong. The first summit of this three tropical forest basin, first summit of this three tropical forest basin was held in Brazzaville in 2011. Quickly, I give you information about Congo Basin, Amazon Basin, and this Borneo Mekong. Then significance of this summit. So you put heading Congo Basin. Second largest tropical forest. Congo Basin क्या है? Second largest tropical forest after Amazon. Congo के लिए लिखो second largest tropical forest after Amazon. 6 countries, जो Congo Basin कौन कौन सी countries में extended है? 6 countries. The Republic of Congo, DRC, Democratic Republic of Congo, the Central African Republic, the Central African Republic, Equatorial Guinea, Cameroon, Gabon. Okay, Congo Basin. Next is Amazon Basin. Largest tropical forest on the earth. अमेजन बेसिन क्या है? लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. 9 कंट्रीज होगी अमेजन के लिए. ब्राजील, ब्रैकेट में लिख सकते हो 60% ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट. पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनामी and Republic of Guyana. Third one is Borneo Mekong Basin. It is the world's third largest carbon sink. Borneo, Mekong and Southeast Basin लिख सकते हो. Mekong Southeast Asia Basin. Southeast Asia Basin. Third largest carbon sink. Okay. Fine. It represent only 1% of the world land. ये जो एरिया, it represent only 1% of the world land.
but hold about 6% of the world's biodiversity. ये रीजन जो है ये 1% ऑफ द लैंड है, बट इट होल्ड 6% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजन. ये तीनों रीजन का मिला के क्या सिग्निफिकेंस बनता है, मतलब दिस थ्री रीजन टुगेदर, मतलब व्हाट आई फील दे कैन हैव ए गुड बार्गेनिंग पावर विद द डेवलप्ड कंट्री, जो मुझे फ्यूचरिस्टिक लग रहा है. आगे जब जो कंपनियां होंगी उनके साथ ये होगा कि पैक्ट कार्बन सिंक कितना है, लाइक हियर देयर विल बी वन ऑफ द क्राइटेरिया कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन सिंक, तो इनमें फिर दे विल हैव एडेड एडवांटेज. ठीक है, दिस रीजन अलोन, ये तीनों रीजन मिला के, दिस रीजन अलोन अकाउंट फॉर 80% द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. 80% the world tropical forest and 2/3 of terrestrial biodiversity. 2/3 of terrestrial biodiversity. Playing an important role in regulating carbon balance on the earth. Playing an important role in regulating carbon balance on the earth. Purpose of the summit. What is the purpose of the summit? To implement, purpose of the summit is to implement within the framework of United Nations Decade for Ecosystem Restoration. The first global coalition to restore 350 million hectares of terrestrial and aquatic ecosystem. Just one note, UN Decade for Ecosystem Restoration, UN Decade on Ecosystem Restoration, running from 2021 until 2030. ठीक है, 2021 से लेके 2030 तक का जो डेकेड है यूएन का, दैट इज ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. ओके, ecosystem restoration. Now next is this is Cabo Delgado. ठीक है, in this Mozambique, like what happened, European Union has approved a military training mission. Okay, so you write about this Cabo Delgado. The European Union has approved
A military training mission in Mozambique to support armed forces to protect the civilian population. Now about this Cabo Delgado, it is northernmost province of Mozambique. ये मोजाम्बिक का ये वाला एरिया है, northernmost province of Mozambique. It is northernmost province of Mozambique. It border Tanzania province, namely Nampula, Nampula, and Nyasa, Niassa. It border तंजानिया प्रोविंस. ये जो प्रोविंस है ये तो मोजाम्बिक की है, काबो डेलगाडो, और तंजानिया को बॉर्डर करते हैं. तंजानिया की जिन प्रोविंस को ये बॉर्डर करते हैं उनका नाम है नेम्पुला, Nampula, Nyasa, Niassa. Here we have one tribe in this area, Cabo Delgado में. You write the name Makonde, Makonde, Makonde tribe live in this region. This is the area. ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, एक आर्म ट्रेनिंग मिशन को अप्रूवल दी ताकि वो सिविलियन को बचा पाए. 2800 के करीब लोग मरे हैं यहाँ पे. 90,000 से ज्यादा, 90,000, 9 लाख से ज्यादा हो गए होमलेस. तो व्हाट यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड, उन्होंने लाइक हियर दे हैव गिवन सपोर्ट और लाइक अप्रूवल टू ए आर्म ट्रेनिंग मिशन कि भैया आपको सिविलियन को हेल्प करते हैं. एंड व्हाट इज दिस प्रोविंस, इट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस मोजाम्बिक विच बॉर्डर तंजानिया हियर. तो तंजानिया की जो प्रोविंस है वो है नामपुला और नयासा, और इन दिस एरिया जो ट्राइब्स रहती है उसका नाम है माकोंडे ट्राइब. इन दिस एरिया काबो डेलगाडो रीजन में ट्राइब is Makonde tribe of Mozambique. Yeah. Next is, we have studied about Sahara Desert, or you know very well about Sahara Desert. There is a transition zone कह सकते हो, या semi arid region which is popularly known as Sahel in Africa. Here you have desert area, here you have savanna, and you have equatorial rainforest. तो उनके बीच में जो है साहेल रीजन है, सेमी एरिड रीजन है ये साहेल. इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ फाइटिंग इन सूडान. डिस्टरबेंस इन सूडान की वजह से ये साहेल रीजन जो है वो न्यूज में रहा है. तो यू राइट अबाउट दिस साहेल रीजन. ongoing fighting in Sudan, ongoing fighting in Sudan, creating a dangerous security situation in the Sahel region. Okay, you just put heading Sahel. I give you one or two information about Sahel region. Sahel is the ecoclimatic and biogeographic transition zone in Africa. ये इको क्लाइमेटिक एंड बायोजोग्राफिकल ट्रांजिशन जोन है अफ्रीका में, बिटवीन सहारा टू द नॉर्थ. इसके नॉर्थ में तो सहारा पड़ता है, सहारा टू द नॉर्थ, एंड सवाना
सवाना क्या होता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन होता है सवाना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पड़ा होगा सवाना, सवाना इन द साउथ। तो अगर जोन वाइज अगर अफ्रीका को देखोगे ना, ये आपका अफ्रीका हो गया। हियर यू हैव डेंस फॉरेस्ट। फिर आपका हो गया सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और ये हो गया पूरा डेजर्ट। तो डेजर्ट और सवाना ग्रासलैंड के बीच में आपको मिलता है सेमी एरिड रीजन। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इकोक्लाइमेटिक एंड बायोजियोग्राफिक ट्रांजिशन एरिया बिटवीन सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड डेजर्ट एरिया, वो है साहेल रीजन। तो यू राइट नेक्स्ट पॉइंट, सेमी एरिड क्लाइमेट। साहेल में क्या मिलेगा? सेमी एरिड क्लाइमेट। Now I just give the list of the country साहेल रीजन के लिए। नदन सेनेगल, might be they give Sahel region country match the following। सदन मतलब ये नदन सदन अगर याद रहे तो ओके, नो इश्यू। अदरवाइज मोरितानिया, सेनेगल, मोरितानिया, सेंट्रल माली, या मैं सिर्फ नाम देता हूं, बुर्किना फासो, अल्जीरिया। अल्जीरिया में बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ है, थोड़ा सा पार्ट अल्जीरिया का। नाइजर, नाइजीरिया, नाइजीरिया का एक्सट्रीम नॉर्थ थोड़ा सा रीजन आता है नाइजीरिया। कैमरून, सेंट्रल कार है वहां पे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सीआर, चाड, Sudan, South Sudan. There are two different countries with the name Sudan and South Sudan. Eritrea, Ethiopia. But major country तो like you can see, yes, मोरितानिया का अच्छा खासा पार्ट है, माली, नाइजर, यहाँ पे कैमरून है, साउथ सुडान। कौन सी रहेगी? एरिट्रिया, इथियोपिया। कार मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देयर इज अ सेपरेट कंट्री सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। It was in news because of the disturbance going in Sudan, fighting going in Sudan की वजह से there is a disturbance going in this region. Now next is in Atlantic Ocean, South America के पास में there is a island. It was in news, Falkland Island. Any type of? I don't think so. इन सब कंट्री में तो ऐसा कुछ नहीं होगा बीच में, लाइक सम ऑफ द कंट्री लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोवास, वो एक है, बट दैट इज फॉर वेस्टर्न साइड। बट ये साहिल कंट्री में ऐसा कोई इफेक्ट आई डोंट नो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज here we have one island, Falkland Island. Who have control over this? Britain. UK, Britain, ठीक है। बट व्हाट हैपन हियर, चाइना ने चौधरी बन के अर्जेंटीना के साथ मिलके एक स्टेटमेंट दे दी कि भैया ये अर्जेंटीना का है, ठीक है, और यूके ने उसको डिनाई कर दिया। दैट वाज द इशू रिलेटेड टू दिस आइलैंड। एंड इवन लाइक रादर देन यूजिंग दिस नेम दे हैव यूज्ड सम अदर नेम व्हिच इज अर्जेंटीना का एक ओरिजिन नाम है, वो कुछ नाम दिया गया इस आइलैंड को। द नेम इज मालविनाज आइलैंड। तो कह रहे हैं कि नाम भी बदल लो, चाइना वाले बोल रहे हैं इसका हमने ब्रिटिश नाम भी नहीं रखना है, मालविनाज आइलैंड।
तो मालविनास जो है वो अर्जेंटीना लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है। यूजिंग द अर्जेंटीना नेम फॉर द टेरिटरी, मतलब उनकी लोकल लैंग्वेज में कुछ होगा, या आई नो लाइक साउथ अमेरिका में तो लाइक स्पेनिश ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो यू राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फॉकलैंड आइलैंड। वी डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक वेस्ट फॉकलैंड है, ईस्ट फॉकलैंड। स्टैनली इज द कैपिटल ऑफ दिस, बट इट व्हाई इट वाज इन न्यूज़, लिख लो। रिसेंटली ब्रिटेन रिजेक्टेड ए स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना। Recently, Britain rejected a statement from China that affirmed AFFIRMAD its support for Argentina's claim to the Falkland Island. I repeat, recently Britain rejected a statement from China that affirmed its support for Argentina's claim to the Falkland Island. जैसे आइडिया की लाइक चाइना ने क्या किया था, लाइक दे हैव गिवन ए स्टेटमेंट फॉर द सॉवरेनिटी ओवर द मालविनास आइलैंड, उन्होंने नाम भी चेंज कर दिया था इसका, बट ब्रिटेन दे हैव रिजेक्टेड दिस। कैपिटल ऑफ दिस इज स्टैनले, ठीक है। There is one Air Force base also, Royal Air Force Base, that is located at Mount Pleasant. ब्रिटेन का एक इसमें एयर बेस भी है, यू राइट रॉयल एयर फोर्स बेस, दैट इज इन माउंट प्लीजेंट। PL, माउंट की MOUNT, प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट। रॉयल एयर फोर्स बेस। देयर आर टू आइलैंड, दो आइलैंड में डिवाइडेड है, वेस्ट फॉकलैंड, ईस्ट फॉकलैंड। कैपिटल स्टेनले हो गया। वाई न्यूज, चाइना ने स्टेटमेंट दी और ब्रिटेन ने रिजेक्ट कर दी। आई डोंट नो IR का, तो फिर आपको जियोपॉलिटिक्स तो आपको चेक करना पड़ेगा। आई डोंट हैव दैट डीप नॉलेज कि मतलब इसकी मेन इंटेंशन क्या है, कि चाइना ताइवान वाले रीजन की वजह से ये पॉलिटिक्स उठी है। आई डोंट हैव आइडिया, आप थोड़ा IR में क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, कि मेन इंटेंशन क्या है। समटाइम्स किसी रीजन में आपको डिस्टर्बेंस दिखती है, उसके पीछे कुछ और रीजन होता है, ठीक है। जैसे घर में कोई लड़ाई हो रही है, उसका रीजन कुछ और ही होता है ना, तो वैसे कुछ भी हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर IR, या जिसका PSIR है उनको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता होगा। नाउ नेक्स्ट इज इन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। हियर वी हैव कंट्री पनामा, वेयर वी हैव पनामा कैनाल, ठीक है। यहाँ पे लाइक हियर देयर इज अ रीजन जिसको लाइक डेरियन गैप बोला गया है। व्हाट दे फाउंड, इलीगल माइग्रेंट, more than 1 lakh people from this country, from Africa nations have crossed by using this route, ठीक है। तो they have taken some action, that why it was in news. तो you put heading Darien Gap, surge in illegal crossing, ठीक है। किस लिए न्यूज में थी? सर्ज, सर्ज मतलब इंक्रीज होना, सर्ज इन इलीगल क्रॉसिंग। नेक्स्ट पॉइंट, in 2021
Panama government recorded a 1,33,000 illegal crossing. And over 500,000 individual, over 500,000 मतलब लगभग 5 लाख लोग इंडिविजुअल ट्रांजिस्टिंग और क्रॉसिंग थ्रू दिस रीजन इन 2023. तो पहले लगभग 2021 में 1 लाख के आसपास लोग और 2023 में लगभग 5 लाख के करीब लोग. ओवर 5 लाख लिख लो, 500,000 मतलब 5 लाख. ओवर 5 लाख इंडिविजुअल has crossed this region in 2023. ठीक है, इसलिए न्यूज में रहा है. Now next is Operation Prosperity Guardian. It is already mentioned in your handout also. Only important point is that Operation Prosperity Guardian is linked with the safety and security in Red Sea launched by USA. ठीक है, USA का एक जहाज लाइक एयर मैरीटाइम जहाज के साथ प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया रेड सी में. ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन इज लिंक्ड विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन रेड सी. नाउ नेक्स्ट इज ईरान. We just check the bordering country of Iran. Idea is, मतलब most expected में in this class we will cover some of the country and some of the sea. Caspian Sea, Black Sea, कुछ sea and जिससे हर साल क्वेश्चन आता है. तो ईरान, आइडिया इज कि ईरान से बॉर्डरिंग कंट्री का क्वेश्चन पूछ ले, whether this country have a border with Iran or not. तो how we remember, this is AAA double TIP. These are the country having border with Iran. Afghanistan, Armenia, Azerbaijan. These are 3A. T में टर्की एंड तुर्कमेनिस्तान. टर्की एंड तुर्कमेनिस्तान. I से इराक. ठीक है. P से पाकिस्तान. This side we have Caspian Sea, this side we have Persian Gulf. Okay, these are having border with Iran. Fine. Next, Jordan. Let us see the bordering country of Jordan. I write here Syria, Iraq, Saudi Arabia, Palestine, Israel. SPIIS. What is important about Jordan? It is not a landlocked, but it is almost a landlocked. बस इसका एक नैरो लाइक यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा में बस एक टच हो रहा है. तो हियर लिख लो, इट इज ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड. इट इज ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड but has a short coastline at the state of Aqaba. तो यहाँ पे स्टेट ऑफ अकाबा है, इस तरफ पर्शियन गल्फ. ठीक है,
नॉट पर्शियन गल्फ, रेड, हाँ रेड सी, नॉट पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ तो उस तरफ है। हियर वी हैव रेड सी, ठीक है, इजिप्ट आ गया ना वहां पे, रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा, ये सिनाई पेनिनसुला है, एंड दिस इज रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ स्वेज, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। यहाँ पे सिर्फ छोटी सी, लाइक हियर दिस इज जॉर्डन कंट्री, हियर वी हैव ओनली ए शॉर्ट कोस्ट लाइन एट गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ अकाबा क्या है, दैट इज रेड सी, फिर आगे वो रेड सी से मिल जाता है। तो इट हैज ए शॉर्ट कोस्ट लाइन एट द स्टेट ऑफ अकाबा एंड आर्म ऑफ द रेड सी। और यहीं पे एक जॉर्डन का पोर्ट है अकाबा, एंड दैट इज द मेजर पोर्ट, वहीं से लाइक टोटल एक्सेस है उसको। कहाँ फंसाएगा एग्जामिनर, देयर इज ए स्मॉल कंट्री इन दिस एरिया, लेबनान, लेबनान इज नॉट हैविंग एनी बाउंड्री विद जॉर्डन, ये ध्यान रखना, एक छोटी सी कंट्री ना ऊपर लेबनान, ये देखो ये रहा लेबनान, तो लेबनान इज नॉट हैविंग एनी बाउंड्री विद जॉर्डन, ये आपका जॉर्डन है यहाँ पे। जिसका बॉर्डर नहीं है वो कौन सी है छोटी कंट्री, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेबनान, ये ध्यान रखना, पिस, SPIIS, these are the 5 country having border with Jordan, कोस्ट लाइन कहाँ है, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, उससे रेड सी, रेड सी। Now next is Pacific Ring of Fire, it was in news because of tsunami, ठीक है, देखो तो ठीक है, I will cover later. Next is this is Colombo Security Conclave. इसके मेंबर कौन कौन है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ऑब्जर्वर है बांग्लादेश एंड सेशल्स। This grouping was in news because after the formation of new government in Maldives, it decided to skip the meeting of CSC in December 2023. मालदीव ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था CSC में 2023 बिकॉज ऑफ द मे बी इंडिया मालदीव्स जो रिलेशन चल रहे हैं। तो हियर मालदीव्स की न्यू गवर्नमेंट जो बनी है, मालदीव्स में इलेक्शन हुए, नई गवर्नमेंट बनी दिसंबर 2023 में, मालदीव्स हैव नॉट अटेंडेड द मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। क्या ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग इनिशियली फॉर्म्ड इन 2011 एज ए ट्राइलेटरल इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग इन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। पहले इसमें 3 मेंबर थे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, देन वी हैव एडेड मॉरिशस, ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया बांग्लादेश और सेशल्स। But Maldives have not participated in the recent meeting. So they might ask member कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के कौन कौन से मेंबर है। There are 4 member, India, Sri Lanka, Maldives, Mauritius. Now next is NB8 countries. It have 5 plus 3, 8 है तो 8 country है। NB8, any idea? नॉर्डिक, बाल्टिक, 5 कंट्री नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन कंट्री और 3 ये 3 सिस्टर भी बोला जाए इसको, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया।
These are called three sister also. Seven sister word we use for northeast, three sister we use for this three small country. And these five are the part of Scandinavian country: Iceland, Denmark, Norway, Sweden, Finland. This Nordic Baltic Cooperation or NB8 is a regional cooperation formed in 1992. ये 1992 में cooperation बना था, which have 5 Nordic country and 3 Baltic countries. In 2000 इसका नाम रखा गया था NB8. थॉमस हेनरिक, एस्टोनिया का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बोला था. Toomas, TOOMAS. I don't think this name is that important, but point is NB8. What are the 8 member? ये बना था 1992 में. 2002 में it has been renamed as NB8. We have 5 country and these 3, 5 Nordic and 3 Baltic countries. Now next is here is one island which was in news, Agalega Island. Agalega Island. Why it was in news? Just note down. Prime Minister Narendra Modi and Mauritius Prime Minister virtually inaugurated an airstrip and a jetty to ensure maritime security and connectivity to Mauritius, Agalega Island. Mauritius का part है? It is under Mauritius. मॉरिशस का ही है अगालेगा, पार्ट ऑफ मॉरिशस. जेटी एंड एयर स्ट्रिप. एक एयर स्ट्रिप, जेटी जो होता है उसके लिए, छोट पानी के जहाज के लिए जो होता है ना, प्लेटफॉर्म की तरह होता है जेटी. जैसे अपना रेलवे में प्लेटफॉर्म होता है ना, तो फॉर पोर्ट जेटी, ठीक है, जहाँ पे पानी के जहाज खड़े होते हैं वो एरिया जेटी कहलाता है. ठीक है. Why Mauritius has chosen India? एक तो लाइक हियर इंडियन पॉपुलेशन है वहां पे, ठीक है, और इंडिया और मॉरिशस का टाइज जो है वो 1948 से चला आ रहा है. मॉरिशस को 20 साल इंडिपेंडेंस मिलने से पहले से. लिखना तो लिख लो. Why did Mauritius choose India? Ties between India and Mauritius go back to 1948. 70% of the inhabitants of Mauritius are from India origin. एक टर्म है, might be they ask, आजकल पूछ लेते ना, बट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक कई टर्म्स पूछी जा चुके हैं. द ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ आगालेगा joint development of Agalega underscore India's commitment to the vision, underscores India's commitment to the
विजन ऑफ सागर, विजन ऑफ सागर एक टर्म दी है, सागर, विजन ऑफ सागर। सागर की फुल फॉर्म लिख लो ब्रैकेट में, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। So if examiner ask about सागर, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन किससे रिलेटेड है? आगालेगा आइलैंड, इंडिया मॉरिशस टाइज हुई है, एक जेटी और एयर स्ट्रिप का इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। वाई मॉरिशस हैज चोजन अस? बिकॉज ऑफ ओल्ड टाइज एंड बिकॉज ऑफ नियरली 70% ऑफ inhabitant in Mauritius are from Indian origin. Now next is blue line. मेनली इंडियन ओशन, क्योंकि चाइना कर रहा है ना यहाँ कैप्चर, श्रीलंका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लू लाइन, so you write about blue line, it is nearly 120 kilometer along Lebanon southern frontier, लेबनान के सदर्न फ्रंटियर में है ब्लू लाइन। ए ब्लू लाइन स्ट्रेचिंग फॉर 120 किलोमीटर along Lebanon southern frontier is a key to peace, is a key to peace in the region, key to peace in the region। It is not a border, ये border नहीं है, but a line of withdrawal, it is not a border but a line of withdrawal it was set up by United Nations in 2000 for the practical purpose of confirming the withdrawal of Israeli force from the south of Lebanon। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लाइक यूएन डिमार्केटेड ब्लू लाइन, ये यूएन ने दी है 2000 में। Now next is in Maldives, this atoll was in news, Adu atoll, ADDU, Adu atoll, लिख लो। It was in news related to withdrawal of Indian troops from Maldives, withdrawal of Indian troops from Maldives। It is also a biosphere reserve recognized by UNESCO. It is also a biosphere reserve recognized by UNESCO. Now next is this Senegal, capital of Senegal is Dakar. It was in news because president has postponed the election. Senegal president postponed presidential election
Senegal president has postponed presidential election due on February 25, due on February 25 on ground of a dispute between the National Assembly and the Constitutional Council. Now next is there is a river, the Dnieper River, that we have studied when we have studied Europe map. There is a dam, Nova Kakhovka Dam. It was in news because of Russia-Ukraine war. ठीक है? Nova Kakhovka Dam. So if they might ask where is this dam, it is on the Dnieper River. ठीक है? Now next we have already done this island. ठीक है? Kachativu Island. Now next in Ladakh region, this road was in news. Nimmu Padam Barcha Road in Ladakh. वेस्ट बैंक का दिस रीजन नहीं, ये वाला है, ये हो गया कच्चातीवू आइलैंड. आई विल क्रॉस चेक, मतलब वेस्ट बैंक. बाकी कवर कर लेते हैं, लास्ट में बता दूंगा इसका देख के. नाउ नेक्स्ट इज लद्दाख. दिस निम्मू पद्दम दारचा रोड and Sinkun La Pass. It was in news because BRO Border Road Organization ने ये रोड तैयार किया है. It was achievement of BRO. ठीक है. Recently लिख लो BRO has achieved a significant milestone by connecting the strategic places in Ladakh. This road serves as a crucial link between Manali and Leh. Passing through Darcha, ये हो गया Darcha, and Nimmu. This is Nimmu along the Kargil-Leh highway.
This road will also help for the economic development in the Jaskar Valley. This road will also help for the economic development in Jaskar Valley. This BRO, Border Road Organization, कब बना था? किसने बनाया था? It was conceived and raised in 1960. BRO was conceived and raised in 1960 by Pandit Jawaharlal Nehru. by Pandit Jawaharlal Nehru to coordinate the speedy development of a network of road. Speedy development of a network of road in the north of a network of roads in the north and northeastern border region of the country. North and northeastern border region of the country. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है बीआरओ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है. नेशनल पार्क तो पता है, यहाँ हैमिस नेशनल पार्क है. दिस रीजन इज हैमिस नेशनल पार्क. Now next is information given in the handout itself. I think read करने में आ रहा होगा. मेरे पास भी वही handout है. Fergana Valley and Isfara Valley conflict in Central Asia, Kyrgyzstan and Tajikistan border dispute continue for 31 years. तो 31 ईयर से बॉर्डर इशू चल रहा है. ठीक है. यहाँ पे ये देख सकते हो रिसेंट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज फरगना वैली. ये 3 कॉलम पढ़ लेते हैं, बाकी तो लाइक एज इट इज. द वैली वेयर दिस कंट्रीज बॉर्डर इंटरसेक्ट इज द मेन फैक्टर इन बॉर्डर डिस्प्यूट. फरगना वैली इंक्लूड फरगना, नमनगन, आंदीजन in Uzbekistan, Kuzanand in Tajikistan, Osh, Jalalabad and Batken in Kyrgyzstan. Recent border conflict, the conflict which began on September 14 on the Kyrgyz-Tajikistan border lasted for 10 hours. It was reported by the Kyrgyz side that 24 were killed and about 90 injured in the incidents. Kyrgyzstan declared a state of emergency in the Batken region on September 17. The two countries established a ceasefire on September 16. Fergana Valley is Isfara Valley, Kyrgyzstan Tajikistan border. Next is दिस इज द हिस्ट्री अबाउट दिस कोरिल आइलैंड डिस्प्यूट. जापान और रशिया का. ठीक है. मेजर ईयर्स मेंशन है. एंड यू नो वेयर इज कोरिल आइलैंड? ये कमचटका पेनिसुला. इट इज रशिया. दिस इज होकाइडो, दैट इज ऑफ जापान. एंड these are Kuril Islands. This is Sea of Okhotsk. ठीक है. So now here history of Kuril dispute. 1985 Treaty of Shimoda gives southern Kuril to Japan and the rest of island chain to Russia. फिर 1975 में Treaty of St. Petersburg हुई, cedes all Kurils to Japan in exchange of Russian jurisdiction of Sakhalin.
1905 में फिर क्या हुआ, आफ्टर रशियाज डिफीट इन रूसो जापानीज वार, जापान गेन कंट्रोल ऑफ सदर्न सकल, तो जापान ने वहां पे भी कब्जा कर लिया। 1945 सोवियत यूनियन ऑक्यूपाई एंटायर कुरिल चेन एंड सदर्न सकलिन आफ्टर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन जापान ड्यूरिंग फाइनल डे ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। 1951 जापान renounces claim to Kuril in Treaty of San Francisco signed between Japan and allied power। फिर यहाँ पे 1956 में क्या होगा, सोवियत जापानीज ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये चलता ही रहता है इनके बीच में। Now next is East Sea, Japan, Sea of Japan। Here this side we have China, here we have Russia, here we have Japan, here we have North Korea, South Korea। तो यहाँ पे तो नॉर्थ कोरिया की वजह से लाइक द प्रॉब्लम इज, यू राइट अबाउट दिस ईस्ट सी, जापान सी, सी ऑफ जापान या ईस्ट सी, इसको ईस्ट सी भी बोलो या सी ऑफ जापान बोलो। दिस रीजन, नॉर्थ कोरिया रिसेंटली fired a ballistic missile into the Sea of Japan, also known as East Sea। North Korea fired a ballistic missile into the Sea of Japan, also known as East Sea। Sea of Japan बोलो या East Sea बोलो, both are same। Here we have two major port in this sea। दो मेजर पोर्ट है यहाँ पे, एक तो रशिया का है व्लादिवोस्तोक ऑफ रशिया, नॉर्थ कोरिया का है हैमहुंग। और भी पोर्ट है बट दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पोर्ट, वन ऑफ रशिया व्लादिवोस्तोक एंड हैमहुंग। इट इज ऑफ नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया का है, एंड इट इज ऑफ रशिया। Now next is, here we have Aegean Sea। So there was a dispute between Greece and Turkey। And here we have Aegean Islands also। ठीक है, लिख लो, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द एशियन आइलैंड बिलोंग टू ग्रीस। Vast majority of the Asian island belongs to Greece। The only island belongs to Turkey are Imbros, Imbros, Tenedos, Tenedos। डिस्प्यूट क्या हुआ इसमें, ग्रीस एंड टर्की आर नाटो अलायंस बट द नेबरिंग कंट्रीज have a history of dispute over a range of issues including mineral exploration in the eastern Mediterranean and rival claim in the Aegean Sea। Turkey argued the island were ceded to Greece on the condition they remained demilitarized। Greece maintained Turkey has deliberately misinterpreted the treaty and say it has legal ground to defend itself
following hostile action by Turkey. लिख सकते हो dispute. Turkey argues the island were ceded to Greece. Argues the island were ceded to Greece. Greece argue Turkey has deliberately misinterpreted the treaties. Turkey has deliberately misinterpreted the treaties and Greece says it has legal ground to defend itself. It has legal ground to defend itself following hostile action by Turkey. Now next is Armenia, Azerbaijan. Nagorno-Karabakh Republic de facto government internationally recognizes Azerbaijani territory held by Armenian military since 1994 ceasefire. I can give you overview. लिख लो Russian peacekeepers have begun withdrawing Russian peacekeepers have begun withdrawing from Nagorno-Karabakh following Azerbaijan recapture of the disputed treaty from Armenian separatists last year. मतलब ये है कि अर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने ये टेरिटरी कैप्चर कर ली थी. अब अजरबैजान ने अपना होल्ड ले लिया इस पे और फिर रशियन पीस कीपर्स वापिस चले. दैट इज द आइडिया. एंड व्हाट इज द रीजन? नगोर्नो काराबख. Some important lake for this year prelims: Urmia in Iran, Lake Razaza, Iraq, Lake Sawa, Iraq. ठीक है, ये नाम न्यूज में थे, जस्ट रिमेंबर कंट्री के साथ. लेक उर्मिया ईरान में, लेक रजाजा इराक, लेक सावा इराक. Just remember this reason. Some region from Russia were in news: Zabaykallask, Kamchatka, Magadan region Russia, Primorskaya, Sakha, and Myanmar का था Rakhine, Kachin, Sitwe. Now next is we have some volcano eruption in the last year. I give you 1122 information about this. We start with this Hunga Tonga. Tonga Island we know that is in Pacific Ocean.
So here Hunga. Haapai. Haapai volcano is in western South Pacific Ocean in Tonga. इन पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन में टोंगा है, वहां पे एक वोल्केनो है, हापई वोल्केनो इज इन द वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन इन टोंगा. नेक्स्ट इज माउंट इटना, सिसली एक आइलैंड है इन मेडिटेरियन सी. दिस इज स्ट्रेटोवोल्केनो. Stratovolcano located in the east coast of Sicily. लिख लो स्ट्रेटोवोल्केनो. स्ट्रेटो जिसमें लेयर्स बनती हैं, स्ट्रेटो स्ट्राटा लेयर, located on the eastern coast of Sicily, an island in the Mediterranean Sea. Sicily जो है an island in the Mediterranean Sea. Next, Mount Ruhang. Stratovolcano, Mount Ruhang. It is also stratovolcano. In Indonesia's North Sulawesi province. तो यहाँ सुलावेसी आइलैंड है, ये नॉर्थ सुलावेसी प्रोविंस में देयर इज अ स्ट्रेटोवोल्केनो इरप्टेड विद द नेम माउंट रूहांग. स्ट्रेटोवोल्केनो इन इंडोनेशियाज नॉर्थ सुलावेसी प्रोविंस. नाउ नेक्स्ट इज माउंट किलोया. It is youngest and most active Hawaiian shield volcano. Youngest and most active Hawaiian shield volcano. In Hawaii we have chain of volcanic islands. तो रीजन बीइंग क्या है कि जो प्लेट है there is a gap in like प्लेट में like what happen that plate is moving. तो नीचे से जो लावा आता है फिर डिपॉजिट होता है then they move. हॉटस्पॉट यस, मतलब प्लेट हॉटस्पॉट है, क्या है कि लाइक प्लेट है, ये प्लेट में यहाँ छेद है, ठीक है, एंड दैट लावा मैग्मा जो है वो आ रहा है, ठीक है, फिर ये प्लेट मूव कर जा रही है आगे, एक यहाँ पे बन गया वोल्केनिक आइलैंड, फिर आगे यहाँ बन गया, तो यंगेस्ट वन इज दिस, यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव हवाईयन शील्ड वोल्केनो इज माउंट किलोआया. तो अभी एट प्रेजेंट जो इरप्शन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है. माउंट मेरापी, ठीक है, माउंट मेरापी volcano in Indonesia's
East Java province volcano in Indonesia is Java province. It is located in the subduction zone where the Indo-Australian plate subduct under the Eurasian plate. जब दो प्लेट का कोलिजन होता है वी हैव सबडक्शन जोन, तो ये सबडक्शन जोन का एग्जांपल है माउंट सिमेरू. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रोम्बोली. माउंट स्ट्रोम्बोली most active volcano on earth, most active. माउंट स्ट्रोम्बोली के लिए लिखना है माउंट स्ट्रोम्बोली. Mount Stromboli volcano, it is the most active volcano on earth, has been erupting almost continuously since 1932. Has been erupting almost continuously since 1932. Now next, Italy. Etna, well, ये सब स्ट्रोम्बोली, इटना, ये सब इटली का पार्ट है. नेक्स्ट इज माउंट लोआ. वर्ल्ड largest active volcano erupted after 38 years. World Mount Loa, largest active volcano erupted after 38 years. हवाई आइलैंड्स में ये, इट इज इन हवाई आइलैंड्स. नाउ नेक्स्ट इज माउंट एरेबस, EREBUS. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अंटार्कटिका में ये हुआ है माउंट एरेबस. इसके लिए लिख लो एन एक्टिव वोल्केनो इन अंटार्कटिका. An active volcano in Antarctica. Most southerly active volcano on earth. रोज आइलैंड अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में भी एक रोज आइलैंड है, वहां पे ये इरप्ट हुआ है. रोज आइलैंड अंटार्कटिका. नाउ नेक्स्ट इज मायोन वोल्केनो. दिस इज फिलीपींस. ठीक है. एक्टिव वोल्केनो इन साउथ ईस्टर्न लुजोन, LUZON. एक्टिव वोल्केनो इन साउथ ईस्टर्न लुजोन, फिलीपींस.
active volcano in southeastern Luzon, Philippines. It lies in the Pacific Ring of Fire region. It lies in the Pacific Ring of Fire region. लुजोन, LUZON, फिलीपींस में एक टेरिटरी है लुजोन, ठीक है, वहां पे ये पड़ा है। अदर डिजास्टर, सोनामी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड है, ड्राउट इन जिम्बाब्वे, लेक करीबा, सोमालिया फ्लैश फ्लड, मलावी कोलेरा आउटब्रेक, लीबिया फ्लैश फ्लड, ठीक है, टर्की में अर्थक्वेक आया था, नेगेव डेजर्ट। Now next is refugee crisis in news. युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये लेक विक्टोरिया है, ठीक है, दिस इज रवांडा, ये एल्बर्ट एडवर्ड कीवू, 3 छोटी लेक है यहाँ पे, सो दिस इज रवांडा। Recently, UK, United Kingdom government has passed a controversial bill. रवांडा न्यूज में क्यों था? Recently, United Kingdom government has passed a controversial bill to send asylum seeker to Rwanda. Asylum seekers to Rwanda in an effort to curb the number of asylum seekers crossing the English Channel. अपने वहां के asylum seeker को वो रवांडा भेजेंगे, ये एक बिल था। Next is Bangladesh. Floating island, new home for Rohingyas, ठीक है। तो बांग्लादेश ने क्या किया? रिसेंटली अथॉरिटी ऑफ बांग्लादेश सेंट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मोर देन 50 रोहिंग्यास रिफ्यूजी टू एन आइसोलेटेड भसन चार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो इन्होंने क्या किया, एक आइसोलेटेड भसन चार आइलैंड है इन द बे ऑफ बंगाल, वहां पे इन रिफ्यूजी को भेज दिया। Bangladesh is turning a cyclone-less island in the Bay of Bengal into a home of 1 lakh Rohingyas Muslim who have fled violence in neighboring Myanmar. Bhasanchar floating island emerged from silt around 20 years ago. It regularly flooded during June to September monsoon season. Area इसका 6.7 square kilometer. More than 6,88,000 Rohingyas have fled persecution in Myanmar, Rakhine state since August 2017, joining around 3 lakh refugees already in Bangladesh. Okay, so this island Bhasanchar, ठीक है, 20 साल पहले ही उभरा है, बट द प्रॉब्लम इज साइक्लोन का इशू होगा। यहाँ पे साइक्लोन एरिया है, फ्लडेड रहता है फ्रॉम जून टू सितंबर, सो दे आर प्लानिंग टू रीलोकेट दिस रोहिंग्यास हियर। नाउ नेक्स्ट इज जबालिया। At least 90
person killed in latest Israeli attack. यहाँ पे जबालिया में एक रिफ्यूजी कैंप है और इजरायली ने उस पर भी अटैक किया तो 90 लोग मर गए. दैट दिस रिफ्यूजी कैंप वाज इन न्यूज. जबालिया 90 killed in Israeli attack in this Jabalia refugee camp. जबालिया गाजा में है ये. इन गाजा बस. और तो आई डोंट थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा. नेक्स्ट इज रफाह कैंप. ठीक है. दिस एरिया जो इजराइल बॉर्डर एरिया है यहाँ पे. ठीक है. Here we have Rafah crossing. RAFAH. Rafah crossing. इसके लिए लिख सकते हो इट इज क्रॉसिंग बिटवीन द गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट. इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट. It is the only route for aid to enter Gaza directly outside Israel. बाकी तो इजराइल से रूट बनेगा. तो इजराइल के अलावा सिर्फ यही एक रूट है रफा, ये वाली जो इजिप्ट से होते हुए गाजा तक जाती है. It is the only route for aid to enter Gaza directly outside Israel. This Rafah crossing, it lies between Israel, Egypt and Mediterranean Sea. एक तरफ इसके इजराइल है, एक तरफ इजिप्ट है और एक तरफ मेडिटेरियन सी है और नॉर्थ में गाजा है. नॉर्थ ऑफ इट इज गाजा एंड मेडिटेरियन सी ऑन वन साइड, इजिप्ट ऑन वन साइड एंड इजराइल. इट लाइज बिटवीन गाजा, इजिप्ट, इजराइल एंड मेडिटेरियन सी कह सकते हो. एक्चुअली देर आर टोटल 3 क्रॉसिंग. ठीक है. एक तो यही हो गया एंड वन इज इन द नॉर्थ जो हो गया एरेस EREZ एंड वन इज दिस विच इज कैरेम सैलोम गुड्स क्रॉसिंग. बट आई थिंक यू जस्ट वर्क ऑन दिस रफाह क्रॉसिंग, रफाह कैंप, रफाह क्रॉसिंग. जॉर्डन में लाइक हेयर बक्का. when we have cover I think about this rift valley it extend in north. फिर रेड सी से अप टू बेखा वैली इन लेबनान, जॉर्डन. ठीक है. आई विल चेक दिस. ठीक है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो रिफ्यूजी एरिया. आई विल चेक. ये मिक्स जो है आई विल चेक इट. देन सम ऑफ द पोर्ट इन न्यूज. यहाँ रशिया में ना कोला पेनिनसुला पे वी हैव ए पोर्ट मुरमांस्क पोर्ट and it is known as ice free port. How come at that latitude we have ice free port?
यहाँ से आपकी जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है, दैट इज द वार्म ओशन करंट, तो उसकी वजह से लाइक हेयर इट रिमेन द आइस फ्री पोर्ट मुरमांस्क, मुरमांस्क पोर्ट. Now next is IMEC ports. This is important. India, Middle East, Europe corridor. Okay, I give you 2-3 information about this IMEC, India, Middle East, Europe corridor. So you write at the sideline of the G20 summit, held in New Delhi, MOU was signed to develop a rail and shipping corridor, rail and shipping corridor connecting India to Europe, rail and shipping corridor connecting India to Europe via the Middle East तो एमओयू किस किस में हुआ बिटवीन इंडिया यूएस बिटवीन इंडिया यूएस सऊदी अरेबिया इंडिया यूएस सऊदी अरेबिया यूएई फ्रांस जर्मनी इटली and European Union. The purpose IMEC will involve, तो इसमें क्या क्या होगा रेल कनेक्टिविटी शिपिंग लाइन हाई स्पीड डेटा केबल एनर्जी पाइपलाइन okay. Now next in US we have one port, Baltimore port. You write about this, the port of Baltimore is the 9th largest US port. By overall trade volume. By overall trade volume, यूएस का 9th लार्जेस्ट पोर्ट है. नाउ नेक्स्ट इजराइल के कुछ पोर्ट न्यूज में रहे हैं. ओनली द नेम हैज बीन गिवन इन दिस मैप. हाल्फा, हंदेरा, तेल अबीब, हसदोद, हसकेलोन. इजराइल बाल्टीमोर है.
मतलब in 2023 alone it move around 50 million ton of goods between US and other country. It is in large shipping container like those sacked in ship that rammed into the breeze. मतलब ऐसा. We'll check. इसराइल के पोर्ट हैं अल्फा, हंदेरा, तल अबीब, हसदोद, हसकेलोन एंड यहाँ पे, ठीक है, इलात. नेक्स्ट इज यूराल रिवर. फ्लड इन रशिया. ठीक है. रशिया रिसेंटली, लिख लो, रशिया रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए फेडरल इमरजेंसी in the southern Orenburg region because of flood in Ural River. Southern Orenburg, Orenburg. Southern Orenburg region because of the flood in Ural River. Next is Danube River. Now what happened in the Danube River? There is one type of fish, ठीक है? A new study revealed that sturgeon, sturgeon products sold in the international market were from illegal trade. Sturgeon is a fish native to lower Danube countries. Lower Danube countries है वहीं मिलती है ये fish. Sturgeon is the fish native to lower Danube country such as Bulgaria, Romania, Serbia and Ukraine. Sturgeon is a fish native to lower Danube countries such as Bulgaria, Romania, Serbia and Ukraine that produces caviar. Caviar. According to researchers, sturgeon has been fished illegally. इलीगली ये और इसके प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं मार्केट में. स्टर्गियन, STURGEON, कहाँ मिलेगी? लोअर डैन्यूब कंट्रीज में. कौन कौन सी कंट्री होगी? बल्गेरिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन. Now next is, we have covered the Tigris and Euphrates river. Where they meet? At Shatt al-Arab in Iraq. इराक में एक प्लेस है शट अल अरब, where this Tigris and Euphrates river meet. अमेजन रिवर यू नो वेरी वेल. इसके लिए न्यूज क्या थी? रिवर फेल टू इट्स लोवेस्ट लेवल
in over a century. It fell to its lowest level in over a century recently. तो जिस रिवाइज अमेजन रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी साउथ अमेरिका में, अगर जब रिवाइज करो ना नोट्स में अमेजन रिवर रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट मैकोंग रिवर. A multi-billion dollar dam project underway across the Mekong River in Laos has raised concern that it could result in Luang Prabang, लिख लो लुवांग, LUANG PRABANG city losing its यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस. ठीक है, इस सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिला हुआ है. अगर ये डैम बनेगा तो इसका ये स्टेटस चला जाएगा. ये इशू है. A multi-billionaire dollar dam project underway across Mekong River in Laos has raised concern that it could result in Luang Prabang city losing its UNESCO World Heritage Site status. Next is Yellow River. Here we have Yellow Sea, जहाँ पे येलो रिवर गिरती है. ठीक है, रीजन नॉर्थ कोरिया. यहाँ पे भी मिसाइल दाग रहा है, यहाँ पे भी दाग रहा है. ठीक है, तो क्यों न्यूज में रहा है? नॉर्थ कोरिया रिसेंटली फायर्ड सेवरल क्रूज मिसाइल इनटू येलो सी. नॉर्थ कोरिया रिसेंटली fired several cruise missile into the Yellow Sea. Black Sea, Red Sea, Caspian Sea. Country bordering Black Sea. कौन कौन सी है? यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, ठीक है, ये बल्गेरिया हो गया, एंड रोमानिया. यूक्रेन 1, दिस इज रशिया 2, 3 जॉर्जिया, 4th is Turkey, 5th Bulgaria, 6th one is Romania. Red Sea, country border Red Sea.
कौन कौन आएगा? इजिप्ट, इसमें वो वाली कंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे जो गल्फ ऑफ अकाबा? जॉर्डन, जॉर्डन यस, क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा में बॉर्डर कर रही है। ठीक है, और कौन कौन सी होगी वहां पे कंट्री? रेड सी, हम्म, सऊदी अरेबिया, यमन, इजराइल का बॉर्डर होता है। हाँ, इजराइल का है, इजराइल का है, जॉर्डन का है। ठीक है, चेक करना एटलस में, ये गूगल मैप पे देख लेना। Why it was in news? A US warship and multi-purpose commercial vehicle were recently attacked in the Red Sea. Okay. Next, Caspian Sea, Mediterranean Sea. Mediterranean Sea में like here just go through कौन कौन से आइलैंड है बीच में। ठीक है, मेन मेन कंट्री, क्योंकि 22 नियरली 22 कंट्री मेक बॉर्डर विद मेडिटेरियन सी, काफी सारा बड़ा है, तो वो तो आई थिंक इतना नहीं पूछता। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी किसी और रीजन से भी न्यूज में था। न्यू लीक फाउंड इन रशियन गैस पाइपलाइन। ठीक है, Sweden has found a new leak in undersea pipeline carrying Russian natural gas to European Union, making it the fourth discovered so far. NATO says the incidents are the result of act of sabotage. ये तो लिखा है आपके हैंड ऑन में। So this Baltic Sea was in news because of leakage in Russian gas pipe. Okay. Now we will give a test. तब तक मैं I will check this 2-3 point. मैं नेट पे एक बार चेक करके बता देता हूँ। एक तो वही था पोर्ट बाल्टीमोर, वाई इट वाज इन न्यूज़। और क्या पॉइंट चेक करना था? एक ये नीचे ये पॉइंट आ रहे थे ना, जॉर्डन बाका, जॉर्डन बाका, BAQAA, कीनिया, ककुमा। में कुछ पॉइंट था। वेस्ट बैंक। ठीक है, आई विल चेक दिस 4 थिंग। बाल्टीमोरे पोर्ट, जॉर्डन का बाका, कीनिया का ककुमा एंड वेस्ट बैंक। ठीक है, मैं तब तक चेक करके आपको बता देता हूँ।
नाउ क्विकली आई टेल यू दिस फोर थिंग, ठीक है। बाल्टीमोर है, वहां पे ब्रिज कोलैप्स हुआ था, ब्रिज हैज बीन कोलैप्स्ड उसमें पोर्ट पे, तो उस वजह से उसके लिए न्यूज में था। देन जॉर्डन बाका BAQAA पैलेस्टाइन रिफ्यूजी कैंप है यहाँ पे, पैलेस्टाइन रिफ्यूजी कैंप। कीनिया कुकुमा, दैट इज ऑल्सो ए रिफ्यूजी कैंप। कच्चा तीवू एंड बेस बैंक, पॉलिटिकली है कि लाइक बीजेपी इन देयर कैंपेन दे रेज द इशू कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये 2 टेरिटरी श्रीलंका को दे दी थी, ये वापिस आनी चाहिए। जो कच्चा तीवू के साथ है वही बेस बैंक के साथ सेम इशू है। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा था इसके ऊपर, वेस्ट बैंक एंड कच्चा तीवू, like BJP government, they have raised the concern that Indira Gandhi at that time has given these 2 territory of India to Sri Lanka, तो ये वापिस आनी चाहिए इंडिया में। वेस्ट बैंक एंड कच्चा तीवू आइलैंड वो तो हम पढ़ ही चुके हैं श्रीलंका के साथ। ये हमें रिटर्न में मिला है, हमने वो दिया और ये लिया है। ओके, वो एग्रीमेंट एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। हाँ ठीक है, वी हैव टू क्रॉस चेक। यू गॉट द टेस्ट पेपर, ट्राई, ठीक है, जितने भी हो नो इश्यू, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस ट्राई दिस क्वेश्चन, यू विल गेट एक्सप्लेनेशन। तो उससे 2 क्वेश्चन भी आ गए एग्जाम में, हमारा काम चल जाएगा ना। दिस questions has been given on mapping, not just to check your knowledge, it has been given, you try this, if you will able to solve, okay, otherwise with explanation you have to read it। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सोनामी, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से सोनामी आई है, तो उसके लिए वो न्यूज में रहा है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तो वैसे भी न्यूज में रहता ही है, डिस्टर्ब एरिया, अर्थक्वेक्स, ओके, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यू सॉल्व दैट 25 क्वेश्चन, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन विल बी अपलोडेड ऑन योर पोर्टल, यू कैन चेक, कुछ करेक्शन होगा तो वी विल अपडेट। ये क्लास एंड कर दो ऑनलाइन वालों के लिए।